Good afternoon, everyone on Facebook Live. मैं आपके सामने I've come live on Facebook because मैं दो तीन चीज़ सबके ध्यान में लाना चाहता था और एक अपील भी करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा एक बात है कि किसी ने मुझे आज नागालैंड से फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उन्होंने पूछा कि प्रद्योत आप लोग एक दूसरे से क्यों फाइट करते रहते हो हमेशा एक दूसरे के संग क्यों फाइट करते हो? हमें देखो नागाज, हम 25 साल से भारत सरकार से, कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैं सबसे हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारा 20 ट्राइब्स है। कोई बैप्टिस्ट है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथलिक है, लेकिन कोई तांकुल है, कोई आओ है, कोई सेमा है, कोई अंगामी है, लेकिन हम लोग वी आर ऑल यूनाइटेड फाइटिंग फॉर द नागा पीपल। हमारा भाषा भी बहुत अलग है, लेकिन तभी भी वी नागाज आर यूनाइटेड, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा अकॉर्ड को कुछ देगा, नागाज बोल रहे थे, तो ये सब नागाज के लिए होगा। उनको चिंता नहीं है कि कौन बीजेपी का नागा है, कौन कांग्रेस का नागा है, कौन एनपीएफ का है, कोई एनडीपीपी का है, जो उनका रीजनल पार्टीज है। उनका कहना है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ देगा तो वो पहले नागा को देगा। तो त्रिपुरा में आप लोग क्यों हमेशा एक दूसरे के संग फाइट कर रहे हो? आपका डिमांड क्या अलग अलग है क्या? तो मैंने आज सवेरे ये बोलने के बाद मुझे लगा कि जो वो कह रहा है इससे सच बात है। तो आप प्लीज सुनिए मैं आज क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो मैंने जाकर बीजेपी का ये जो घोषणा पत्र है मैंने देखा, 125th अमेंडमेंट, वो तो हमारा भी डिमांड है। डायरेक्ट फंडिंग, वो तो हमारा भी डिमांड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन गंडोत्रीसा, महाराजा वीर विक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन गंडोत्रीसा, हम उससे भी अग्री करते हैं। तब लैंड राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग और ये सब जो उनका सब पॉइंट्स है उन्होंने दिया है, सब से हमारा अग्रीमेंट है। तो मुझे लगा कि मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट से बात करूं, राजीव जी, और मैंने उनसे बात भी किया। और मुझे लगता है कि हम लोगों को एक संग बैठकर जिस जिस पॉइंट में हमारा अग्रीमेंट है, आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं, उसमें बैठकर एक साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए कि अकॉर्ड तो बात चल रहा है, लेकिन ये पॉइंट में तो हम लोग सब अग्री करते हैं, इसको तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जब ये होगा तब हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए बात करेंगे। बेनिफिट किसको मिलेगा? सीपीएम का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, बीजेपी का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, कांग्रेस का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, मौथा का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो अपने बच्चे लोगों को मिलेगा। तो हमको लगता है कि पार्टी के बारे दिल्ली में जाकर मेरा पार्टी को जिताइए, इसको हराइए, ये नहीं करके, पॉलिटिक्स और इलेक्शन तो चलते रहेगा, लेकिन जहां में आप लोग भी एग्री करते हैं और मैं भी एग्री करता हूं, चलो बैठते हैं फेस टू फेस, और जब तब देखते हैं, चलो ये तो दे दो अभी जो तिपरासा अकॉर्ड चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा डिमांड है कि अपने लोगों को लैंड राइट्स देना, ठीक है। मेरा डिमांड है कि हमारे लोगों को जो एडीसी में रह रहे हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए। शायद उसमें डिफरेंसेस हो सकता है। मेरा डिमांड है कि एडीसी उसमें भी आप अग्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं डायरेक्ट फंडिंग का, आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं 125th अमेंडमेंट पास होने का, आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं कि सेंट्रल कॉलेज आने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने के लिए, आप और हम
कह रहे हैं कि मोर पावर्स टू एडीसी दिया जाए, तो जिसमें हम लोग पहले से अग्री कर रहे हैं, तो आप बीजेपी बन के क्यों दिल्ली जाएंगे? मैं मोथा बन के दिल्ली क्यों जाऊंगा? दोनों बैठकर एक संग एक आवाज में दिल्ली को चिट्ठी लिख के बोलिए कि इसमें हम लोगों का कोई सब अग्रीमेंट है, आप इसको कीजिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शायद नहीं अग्री करेंगे कि पगबरक रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए। मेरा बात है कि रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए। चलो, उसको हम लोग नहीं लिखते, उसको मैं अलग से फाइट करूंगा। लेकिन जिसमें अग्रीमेंट है, अगर हम लोग दिल्ली में भेजते हैं तो बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट तो हमारे बच्चे लोगों को मिलेगा, पैसा आएगा। रास्ता मैंने देखा है, रास्ता बारिश से इतना बिगड़ गया है, पैसा आकर रास्ता बनेगा तो वो रास्ता में तो हर तिपरासा चलेगा ना, जो आपको वोट भी करता है, जो आपको वोट नहीं भी करता वो भी चलेगा। तो मैंने बीजेपी के प्रेसिडेंट से आज ही बात किया, राजीव भट्टाचार्य से, और मैंने कहा कि हमको बैठकर एक बार बात करना चाहिए और अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को नहीं, अपने लोगों को, अपने त्रिपुरा के लोगों को जो वोट भी नहीं करते, उनके बारे में सोचना चाहिए। एंड हाँ, अजय चौरकी, डोंट कॉम्प्रोमाइज, हाँ एक साथ ही रहेंगे। और जैसे नागा लोग, जैसे मिजो लोग, खासीज, गारोज, फर्स्ट दे टॉक अबाउट द कम्युनिटी, देन दे टॉक अबाउट द पार्टीज। हम लोगों को भी अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट, दफा का इंटरेस्ट सामने रखना चाहिए। पॉलिटिक्स हम कब तक करेंगे? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो पॉलिटिक्स करके क्या फायदा? आए हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, तो ये मेरा सजेशन है, मेरा ओपन ऑफर भी है। मुझे लगता है कि जिनके दिल में हमारे लोगों का, हमारे बच्चे का, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्यार है, वो ये बात में अग्री करेंगे, और जो अग्री नहीं करेंगे उनका एजेंडा कुछ और होगा। बट आई एम होपफुल। और ऐसे भी वी आर अलायंस पार्टनर्स, और अलायंस पार्टनर को बैठकर जिसमें अग्रीमेंट है वो दिल्ली को भेजना चाहिए। क्यों हम लोग तिपरासा से फाइट करके तिपरासा को गरीब रखें? क्यों? हमको भी सीखना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। लेकिन देखो, मैं ये मोथा का लीडर बन के नहीं बोल रहा हूं, मैं वीर विक्रम का नाती बन के बोल रहा हूं। और अपने लोगों को, सब लोगों को मैं थोड़ा सा प्यार करता हूं, कुछ देना चाहता हूं। इसके लिए मेरा सजेशन है, लेट अस कम टुगेदर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। जो मैं बोल रहा हूं, हाँ जौहर, मैंने देखा पूरा मैनिफेस्टो, मेरे पास है मैनिफेस्टो उनका, आप भी उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। आई थिंक बहुत चीज में हम अग्री करते हैं, तो उनका मैनिफेस्टो में जो है वो तो इम्प्लीमेंट कर दे। अकॉर्ड का बात वो तो हम बात कर रहे हैं, हम तो फाइट करेंगे, टिपरा लैंड के लिए तो फाइट करेंगे, लेकिन इसको तो आप पहले, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो प्लीज आप भी अपने तरफ से इन लोगों को समझाइए कि जैसे नागा बैठकर पहले नागा के बारे में बात करते, उसके बाद अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते, जैसे खासीज गारोज करते, जैसे मिजोज करते, मिजोज डू द सेम थिंग। तिपरासास को भी ये करना चाहिए। और हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को हम प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। और इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कुछ नहीं देता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरीका होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक प्रेशर रखना कि देखो हम लोग दोनों एक हैं, आप पूरा कीजिए। आई थिंक ये अच्छा मेरा सजेशन है, मैंने बात किया है। राजीव जी वॉज वेरी काइंड एंड ही अग्रीड। लेकिन आई थिंक जनजाति मोर्चा एंड तिपरा मोथा शुड सिट डाउन एंड एटलीस्ट पुट फॉरवर्ड द पॉइंट वेयर वी आर बोथ इन अग्रीमेंट
for the betterment of our people, rather than having differences in 3 or 4 issues. आपको क्या लगता है? Do you think it's a good suggestion? अगर आपको लगता है तो आप उनको भी समझाइए. मैं तो अपनी तरफ से उनको समझाऊंगा, बात भी करूंगा. बेलाइनो हम बाय. हैव अ वंडरफुल डे एंड आई लव यू. तिप्रासा दोफा आइक्लॉक था. Good afternoon, everyone on Facebook Live. मैं आपके सामने I've come live on Facebook because मैं 2-3 चीज़ सबके ध्यान में लाना चाहता था और एक अपील भी करना चाहता हूँ. सबसे पहले मेरा एक बात है कि किसी ने मुझे आज नागालैंड से फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उन्होंने पूछा कि प्रद्योत आप लोग एक दूसरे से क्यों फाइट करते रहते हो हमेशा एक दूसरे के साथ क्यों फाइट करते हो? हमें देखो नागाज, हम लोग 25 साल से भारत सरकार से, कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैं सबसे हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं. लेकिन हम लोग हमारा 20 ट्राइब्स है. कोई बैप्टिस्ट है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथलिक है, लेकिन कोई थांकुल है, कोई आओ है, कोई सेमा है, कोई अंगामी है. लेकिन हम लोग वी आर ऑल यूनाइटेड फाइटिंग फॉर द नागा पीपल. हमारा भाषा भी बहुत अलग है, लेकिन तभी भी वी नागाज आर यूनाइटेड. क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा अकॉर्ड को कुछ देगा, नागाज बोल रहे थे, तो ये सब नागाज के लिए होगा. उनको चिंता नहीं है कि कौन बीजेपी का नागा है, कौन कांग्रेस का नागा है, कौन एनपीएफ का है, कोई एनडीपीपी का है, जो उनका रीजनल पार्टीज है. उनका कहना है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ देगा तो वो पहले नागा को देगा. तो त्रिपुरा में आप लोग क्यों हमेशा एक दूसरे के संग फाइट कर रहे हो? आपका डिमांड क्या अलग अलग है क्या? तो मैंने आज सवेरे ये बोलने के बाद मुझे लगा कि जो वो कह रहा है इससे सच बात है. तो आप प्लीज सुनिए मैं आज क्या बोल रहा हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. तो मैंने जाकर बीजेपी का ये जो घोषणा पत्र है मैंने देखा. 125th अमेंडमेंट, वो तो हमारा भी डिमांड है. डायरेक्ट फंडिंग, वो तो हमारा भी डिमांड है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन गंडोत्रीसा, महाराजा वीर विक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन गंडोत्रीसा, हम उससे भी अग्री करते हैं. तब लैंड राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग और ये सब जो उनका सब पॉइंट्स है उन्होंने दिया है, सब से हमारा अग्रीमेंट है. तो मुझे लगा कि मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट से बात करूं, राजीव जी, और मैंने उनसे बात भी किया. और मुझे लगता है कि हम लोगों को एक संग बैठकर जिस पॉइंट में हमारा अग्रीमेंट है, आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं, उसमें बैठकर एक साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए कि अकॉर्ड तो बात चल रहा है, लेकिन ये पॉइंट में तो हम लोग सब अग्री करते हैं, तो आप इंप्लीमेंट कीजिए. जब ये होगा तब हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए बात करेंगे. बेनिफिट किसको मिलेगा? सीपीएम का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, बीजेपी का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, कांग्रेस का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, मौथा का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा. बेनिफिट तो अपने बच्चे लोगों को मिलेगा. तो हमको लगता है कि पार्टी के बारे दिल्ली में जाकर मेरा पार्टी को जिताइए, इसको हराइए, ये नहीं करके, पॉलिटिक्स और इलेक्शन तो चलते रहेगा, लेकिन जहां में आप लोग भी एग्री करते हैं और मैं भी एग्री करता हूं, चलो बैठते हैं फेस टू फेस और तब देखते हैं. चलो ये तो दे दो अभी, जो तिपरासा अकॉर्ड चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा डिमांड है कि अपने लोगों को लैंड राइट्स देना. ठीक है, मेरा डिमांड है कि हमारे लोगों को जो एडीसी में रह रहे हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए. शायद उसमें
डिफरेंसेस हो सकता है। मेरा डिमांड है कि एडीसी में एडीसी पुलिस हो, उसमें भी आप अग्री नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं डायरेक्ट फंडिंग का, आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं 125th अमेंडमेंट पास होने का, आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं कि सेंट्रल कॉलेज आने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने के लिए, आप और हम कह रहे हैं कि मोर पावर्स टू एडीसी दिया जाए, तो जिसमें हम लोग पहले से अग्री कर रहे हैं, तो आप बीजेपी बन के क्यों दिल्ली जाएंगे? मैं मोथा बन के दिल्ली क्यों जाऊंगा? दोनों बैठकर एक संग एक आवाज में दिल्ली को चिट्ठी लिख के बोलिए कि इसमें हम लोगों का कोई सब अग्रीमेंट है, आप इसको कीजिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शायद नहीं अग्री करेंगे कि पगबरक रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए। मेरा बात है कि रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए। चलो, उसको हम लोग नहीं लिखते, उसको मैं अलग से फाइट करूंगा। लेकिन जिसमें अग्रीमेंट है, अगर दिल्ली में भेजते हैं तो बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट तो हमारे बच्चे लोगों को मिलेगा, पैसा आएगा। रास्ता मैंने देखा है, रास्ता बारिश से इतना बिगड़ गया है, पैसा आकर रास्ता बनेगा तो वो रास्ता में तो हर तिपरासा चलेगा ना, जो आपको वोट भी करता है, जो आपको वोट नहीं भी करता वो भी चलेगा। तो मैंने बीजेपी के प्रेसिडेंट से आज ही बात किया, राजीव भट्टाचार्य से, और मैंने कहा कि हमको बैठकर एक बार बात करना चाहिए और अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को नहीं, अपने लोगों को, अपने त्रिपुरा के लोगों को जो वोट भी नहीं करते, उनके बारे में सोचना चाहिए। एंड हाँ, अजय चौरकी, डोंट कॉम्प्रोमाइज, हाँ, एक साथ ही रहेंगे। और जैसे नागा लोग, जैसे मिजो लोग, खासीज, गारोज, फर्स्ट दे टॉक अबाउट द कम्युनिटी, देन दे टॉक अबाउट द पार्टीज। हम लोगों को भी अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट, दफा का इंटरेस्ट सामने रखना चाहिए। पॉलिटिक्स हम कब तक करेंगे? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो पॉलिटिक्स करके क्या फायदा? आए हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, तो ये मेरा सजेशन है, मेरा ओपन ऑफर भी है। मुझे लगता है कि जिनके दिल में हमारे लोगों का, हमारे बच्चे का, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्यार है, वो ये बात में अग्री करेंगे, और जो अग्री नहीं करेंगे उनका एजेंडा कुछ और होगा। बट आई एम होपफुल। और ऐसे भी वी आर अलायंस पार्टनर्स, और अलायंस पार्टनर को बैठकर जिसमें अग्रीमेंट है वो दिल्ली को भेजना चाहिए। क्यों हम लोग तिपरासा से फाइट करके तिपरासा को गरीब रखें? क्यों? हमको भी सीखना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। लेकिन देखो, मैं ये मोथा का लीडर बन के नहीं बोल रहा हूं, मैं वीर विक्रम का नाती बन के बोल रहा हूं। और अपने लोगों को, सब लोगों को मैं थोड़ा सा प्यार करता हूं, कुछ देना चाहता हूं। इसके लिए मेरा सजेशन है, लेट अस कम टुगेदर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। जो मैं बोल रहा हूं, हाँ जौहर, मैंने देखा पूरा मैनिफेस्टो, मेरे पास है मैनिफेस्टो उनका, आप भी उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। आई थिंक बहुत चीज में हम अग्री करते हैं, तो उनका मैनिफेस्टो में जो है वो तो इम्प्लीमेंट कर दे। अकॉर्ड का बात, वो तो हम बात कर रहे हैं, हम तो फाइट करेंगे, टिपरा लैंड के लिए तो फाइट करेंगे, लेकिन इसको तो आप पहले, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो प्लीज आप भी अपनी तरफ से इन लोगों को समझाइए कि जैसे नागा बैठकर पहले नागा के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं, जैसे खासीज गारोज करते हैं, जैसे मिजोज करते हैं, मिजोज डू द सेम थिंग। तिपरासास को भी ये करना चाहिए। और हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को हम प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। और इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कुछ नहीं देता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
तो ये भी एक तरीका होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक प्रेशर रखना कि देखो हम लोग दोनों एक हैं, आप पूरा कीजिए। आई थिंक ये अच्छा मेरा सजेशन है, मैंने बात किया है। राजीव जी वॉज वेरी काइंड एंड ही अग्रीड, लेकिन आई थिंक जनजाति मोर्चा एंड तिपरा मोथा शुड सिट डाउन एंड एटलीस्ट पुट forward the point where we are both in agreement for the betterment of our people, rather than having differences in 3 or 4 issues. आपको क्या लगता है? Do you think it's a good suggestion? अगर आपको लगता है तो आप उनको भी समझाइए। मैं तो अपनी तरफ से उनको समझाऊंगा, बात भी करूंगा। बेलाइनो हम बाय, हैव अ वंडरफुल डे एंड आई लव यू। तिपरासा दोफा आइक लॉक था। Good afternoon, everyone on Facebook Live. मैं आपके सामने I've come live on Facebook because मैं 2-3 चीज़ सबके ध्यान में लाना चाहता था और एक अपील भी करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा एक बात है कि किसी ने मुझे आज नागालैंड से फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उन्होंने पूछा कि प्रद्योत आप लोग एक दूसरे से क्यों फाइट करते रहते हो हमेशा एक दूसरे के साथ क्यों फाइट करते हो? हमें देखो नागाज, हम लोग 25 साल से भारत सरकार से, कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैं सबसे हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारा 20 ट्राइब्स है। कोई बैप्टिस्ट है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथलिक है, लेकिन कोई थांकुल है, कोई आओ है, कोई सेमा है, कोई अंगामी है, लेकिन हम लोग वी आर ऑल यूनाइटेड फाइटिंग फॉर द नागा पीपल। हमारा भाषा भी बहुत अलग है, लेकिन तभी भी वी नागाज आर यूनाइटेड, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा अकॉर्ड को कुछ देगा, नागाज बोल रहे थे, तो ये सब नागाज के लिए होगा। उनको चिंता नहीं है कि कौन बीजेपी का नागा है, कौन कांग्रेस का नागा है, कौन एनपीएफ का है, कोई एनडीपीपी का है, जो उनका रीजनल पार्टीज है। उनका कहना है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ देगा तो वो पहले नागा को देगा। तो त्रिपुरा में आप लोग क्यों हमेशा एक दूसरे के संग फाइट कर रहे हो? आपका डिमांड क्या अलग अलग है क्या? तो मैंने आज सवेरे ये बोलने के बाद मुझे लगा कि जो वो कह रहा है इससे सच बात है। तो आप प्लीज सुनिए मैं आज क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो मैंने जाकर बीजेपी का ये जो घोषणा पत्र है मैंने देखा, 125th अमेंडमेंट, वो तो हमारा भी डिमांड है। डायरेक्ट फंडिंग, वो तो हमारा भी डिमांड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन गंडोत्रीसा, महाराजा वीर विक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन गंडोत्रीसा, हम उससे भी अग्री करते हैं। तब लैंड राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग और ये सब जो उनका सब पॉइंट्स है उन्होंने दिया है, सब से हमारा अग्रीमेंट है। तो मुझे लगा कि मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट से बात करूं, राजीव जी, और मैंने उनसे बात भी किया। और मुझे लगता है कि हम लोगों को एक संग बैठकर जिस पॉइंट में हमारा अग्रीमेंट है, आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं, उसमें बैठकर एक साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए कि अकॉर्ड तो बात चल रहा है, लेकिन ये पॉइंट में तो हम लोग सब एग्री करते हैं, इसको तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जब ये होगा तब हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए बात करेंगे। बेनिफिट किसको मिलेगा? सीपीएम का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, बीजेपी का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, कांग्रेस का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा, मोथा का तिपरासा को भी बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो अपने बच्चे लोगों को मिलेगा। तो हमको लगता है कि पार्टी के बारे दिल्ली में जाकर मेरा पार्टी को जिताइए, इसको हराइए, ये नहीं करके, पॉलिटिक्स और इलेक्शन तो चलते रहेगा, लेकिन
जहां में आप लोग भी एग्री करते हैं और मैं भी एग्री करता हूं, चलो बैठते हैं फेस टू फेस, और जब तब देखते हैं, चलो ये तो दे दो अभी जो तिपरासा अकॉर्ड चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा डिमांड है कि अपने लोगों को लैंड राइट्स देना, ठीक है। मेरा डिमांड है कि हमारे लोगों को जो एडीसी में रह रहे हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए। शायद उसमें डिफरेंसेस हो सकता है। मेरा डिमांड है कि एडीसी में एडीसी पुलिस हो, उसमें भी आप अग्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं डायरेक्ट फंडिंग का, आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं 125th अमेंडमेंट पास होने का, आप और हम दोनों अग्री कर रहे हैं कि सेंट्रल कॉलेज आने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने के लिए, आप और हम कह रहे हैं कि मोर पावर्स टू एडीसी दिया जाए, तो जिसमें हम लोग पहले से अग्री कर रहे हैं, तो आप बीजेपी बन के क्यों दिल्ली जाएंगे, मैं मोथा बन के दिल्ली क्यों जाऊंगा? दोनों बैठकर एक संग एक आवाज में दिल्ली को चिट्ठी लिख के बोलिए कि इसमें हम लोगों का कोई सब अग्रीमेंट है, आप इसको कीजिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शायद नहीं एग्री करेंगे कि पगबरक रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, मेरा बात है कि रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए। चलो उसको हम लोग नहीं लिखते, उसको मैं अलग से, लेकिन जिसमें अग्रीमेंट है, अगर हम लोग दिल्ली में भेजते हैं तो बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट तो हमारे बच्चे लोगों को मिलेगा, पैसा आएगा। रास्ता मैंने देखा है, रास्ता बारिश से इतना बिगड़ गया है, पैसा आकर रास्ता बनेगा तो वो रास्ता में तो हर तिपरासा चलेगा ना, जो आपको वोट भी करता है, जो आपको वोट नहीं भी करता वो भी चलेगा। तो मैंने बीजेपी के प्रेसिडेंट से आज ही बात किया, राजीव भट्टाचार्य से, और मैंने कहा कि हमको बैठकर एक बार बात करना चाहिए और अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को नहीं, अपने लोगों को, अपने लोगों को, अपने त्रिपुरा के लोगों को जो वोट भी नहीं करते, उनके बारे में सोचना चाहिए। एंड हाँ, अजय चौरकी, डोंट कॉम्प्रोमाइज, हाँ एक साथ ही रहेंगे। और जैसे नागा लोग, जैसे मिजो लोग, खासीज, गारोज, फर्स्ट दे टॉक अबाउट द कम्युनिटी, देन दे टॉक अबाउट द पार्टीज। हम लोगों को भी अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट, दफा का सामने रखना चाहिए। पॉलिटिक्स हम कब तक करेंगे? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो पॉलिटिक्स करके क्या फायदा? आए हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। ये मेरा सजेशन है, मेरा ओपन ऑफर भी है। मुझे लगता है कि जिनके दिल में हमारे लोगों का, हमारे बच्चे का, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्यार है, वो ये बात में अग्री करेंगे, और जो अग्री नहीं करेंगे उनका एजेंडा कुछ और होगा। बट आई एम होपफुल। और ऐसे भी वी आर अलायंस पार्टनर्स, और अलायंस पार्टनर को बैठकर जिसमें अग्रीमेंट है वो दिल्ली को भेजना चाहिए। क्यों हम लोग तिपरासा से फाइट करके तिपरासा को गरीब रखें? क्यों? हमको भी सीखना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। लेकिन देखो, मैं ये मोथा का लीडर बन के नहीं बोल रहा हूं, मैं वीर विक्रम का नाती बन के बोल रहा हूं। और अपने लोगों को, सब लोगों को मैं थोड़ा सा प्यार करता हूं, कुछ देना चाहता हूं। इसके लिए मेरा सजेशन है, लेट अस कम टुगेदर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। जो मैं बोल रहा हूं, हाँ जौहर, मैंने देखा पूरा मैनिफेस्टो, मेरे पास है मैनिफेस्टो उनका, आप भी उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। आई थिंक बहुत चीज में हम अग्री करते हैं, तो उनका मैनिफेस्टो में जो है वो तो इम्प्लीमेंट कर दे। अकॉर्ड का बात वो तो हम बात कर रहे हैं, हम तो फाइट करेंगे, टिपरा लैंड के लिए तो फाइट करेंगे।